Good morning, students. Welcome back to maths class. Hope you all are fine and hope you all have enjoyed your winter break also. Students, in winter break, I have given two activities to you. So, send your work on time to get full marks. This is reminder for all of you. Send your work on time to get full marks. Fine. So let's start with exercise 11.5 question number third. Okay. So you will not write anything. First of all, put your whole concentration on understanding. After that, I will give you time for writing. Okay. So look here. Here in A part we have 5m is equal to 60. This is given and this question is same as question number 4th and question number 5th that we have already done. Question number 4th and question number 5th. Fine. So, yes Pranav, what happened beta? मैम हमारी क्लास में कोई एंजल वर्मा 6th भी आई है. No issue, no issue. Okay, so look here. So 5m is equal to 60. This is given. Now, first of all, check that variable on which side. This is equal to, this side is known as left hand side and this side is known as right hand side. So as variable on left hand side, so you will write here left hand side is equal to 5m. This is left hand side. अगर हमारा वेरिएबल राइट हैंड साइड में होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, राइट हैंड साइड. फाइन. नाउ 5m is 5 multiplied by m. You know na, if no sign is visible here, it means sign of multiplication. So this is 5m. Now start putting value one by one as question number 4 and question number 5th. These are values. So first of all, put m. This is 10. Use 10. This 10. So this is equal to 5 multiplied by 10 is equal to 50. So this is not equal to right hand side. So write like this because right hand side is 60. Now come to the next. Same. Repeat. Now use, this is done. Now use 5. Again write left hand side. Write again and again. 5m is equal to 5 multiplied by m is equal to 5 multiplied by 5. So this is 25. Again 25 is not equal to right hand side. Repeat again and again. Okay? Yes, Harjeet? Harjeet, unmute yourself. मैम आप Yes. मैम आपके बीच में से वॉइस अड़ के आती है. Harjeet, check your connection, beta. Okay? So, yes. So, Harjeet, beta, my voice is clear as other students written here. So, please check your connection. Fine. So, next, use 5 done. Use 12. Use 12. Again, left hand side is equal to 5m. 5 multiplied by m. 5 multiplied by 12 is equal to 60. And this is equal to right hand side. Fine.
नाउ बेटा अगर आपका आंसर आ गया, इट डजंट मीन कि आपने रुक जाना है, रुकना नहीं है. चेक द क्वेश्चन. Show that the other value do not satisfy the equation. Check next value also. Now next is use 15. Again, left hand side is equal to 5m is equal to 5 multiplied by m. 5 multiplied by 15 is equal to 75, which is not equal to right hand side. So check each and every value given here, जैसे हमने फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन में किया था. फाइन. सो इन द एंड यू विल राइट रिजल्ट. हमारा आंसर 60 किसने दिया? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. वी गेट 60 बाय विच वैल्यू ऑफ m? Very good, Suhana. 12. So m is equal to 12. Yes. So like this we will write. So first of all 5m, I am repeating one more time. 5m is equal to 60. Left hand side. Why I am writing here left hand side? Because my variable on the left hand side is equal to साइन के बेटा इधर को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इस साइड को राइट हैंड साइड बोलते हैं. So 5m is equal to 5 multiplied by m. First of all use 10. 50 which is not equal to right hand side. Similarly put 5 multiplied by m. 5 multiplied by 5, 25. Okay, so write down, then we will start next question. Yes Chinmay. मैम मैंने पूछा था आपने फर्स्ट 5 मिनट्स में क्या कराया था? बेटा ये क्वेश्चन करवाया, आप हमेशा लेट ज्वाइन करते हो. लास्ट टाइम भी, लास्ट लेक्चर्स में भी आपने मुझे यही सेम पूछा था, आपने पिछले 5 मिनट में क्या कराया, यही कराया मैंने क्वेश्चन. So be on time. Students write down and after writing tell me, then we will start next question. Chinmay, all questions are same. Okay, so put your concentration on the next question. Now come to the B part. Come to the B part. N plus 12 is equal to 20. Values are given to you. 12, 8, 20, 0. And you can solve the sums in column also. Your wish. Okay. This question I will explain with columns. 4 values now. 1, 2, 3, 4. So make 4 columns. 1, 2, 3, 4. 4 columns. Okay. 1, 2, 3, 4. Why 4 columns? Because we have 4 values. Again, left in each column write left hand side. 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 ऐसे आपको ज्यादा इजी लगेगा. Okay. So why I am writing here left hand side? Because हमारा variable left hand side में है. Now write down n plus 12, n plus 12, n plus 12, n plus 12. Okay. Now start putting. First of all, first n. This is 12. So 12 plus 12, 24, which is not equal to right hand side. Fine. Come to the next. In place of n, put 8. 8 plus 12, 20. Again, this is not equal to right hand side. Now come to the next. Again, put n is equal to 20. 32.
sorry, which is equal to right hand side. Yes, yes, Kanav, very good. 20 is equal to right hand side. Yes. So 32 is not equal to right hand side. Similarly, 0 plus 12, 12, which is not equal to right hand side. Fine. According to me, this method is easy as compared to previous. इसमें आपको solve करना easy रहेगा. So 4 columns. Why 4 columns? Because we have 4 values. 1, 2, 3, 4. If we have 5 values, then we will make 5 columns. If we have 3 values, then we will make 3 columns. Okay? So here we have 4 values. So we will make 4 columns. So we will get result with, so in the result, you will write n is equal to 8. Same as question number 4th and question number 5th. Same. ऐसे ही था ना? Question 4th and question 5th. So we get 20 as right hand side is 20. We get 20 with n is equal to 8. So in the result you will write n is equal to 8. But you have to show each and every value. Okay? 1, 2, 3, 4, each and every value. Note down. After writing, tell me. Then we will start next question. Beta, who is on the ID of iPhone? Please write down in the chat box, as I have to mark attendance. ID, iPhone. Please write down your name in the chat box, beta. Jashanpreet. Okay, Jashan, fine. Fine. So let's start with E part. A, B, C, D, E. E part. Next is E part. In the E part, r minus 4 is equal to 0. You want 0 and values are 4 minus 4, 8, 0. So, who will solve this sum? Raise your hand. Students who want to solve this sum, raise your hand. Fine. Yes, Rachit, unmute yourself. मैम पहले हमने ना उसमें हमने लिखना है इक्वेशन को r माइनस 4 इज इक्वल टू 0. उसके बाद हमने लिखना है यूज 4 एज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू r माइनस 4. उसके बाद 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS. Very good. Okay. What is next step? मैम उसके बाद हमने यूज करना है -4 माइनस इक्वल टू LHS माइनस 4 LHS माइनस इक्वल टू क्या कहते हैं 0 -4 माइनस 4 इक्वल टू -8 इज इक्वल टू RHS. रचित वेट बेटा, स्पीक स्लोली बोलो. यहाँ पे अब क्या पुट करना है? मैम हमने यहाँ पे लिखना है यूज -4. हाँ, अब r की जगह हमने क्या यूज करना है? -4. -4. नाउ टेल मी -4 क्या होगा? -8. Very good. Students, recall integers. Minus plus, but with negative sign, -8, which is not equal to right hand side. Yes, very good. So recall integers. In integers we have minus plus.
minus minus plus, so 4 plus 4 8, but both the numbers with negative sign, so result also with negative sign. Okay, now what is the next step, Rachit? Ma'am, then we write 8 is equal to 8, use 8, LHS is equal to 8 minus 4 is equal to 4. Which is Hence the, yes, ma'am, minus 8 minus 4 is equal to 4 is unequal to RHS. Ma'am, फिर fourth step हमने करना है use 0, yes, very LHS is good, equal to 0 minus 4, answer minus 4, and very good. 0 minus 4 will give you minus 4 because 0 has no value. So 0 minus 4, as 0 has no value, so the result is minus 4, which is again not equal to right hand side. So in the result, we will write R is equal to 4. ma'am, Yes, very good, Rachit. Very good. Well done. Yes. Like this, we will solve the sum. So, 4 values 1, 2, 3, 4. 4 values, it means 4 columns 1, 2, 3, 4. In each column, you will write left hand side. Why? Because R variable on the left hand side. So R minus 4, R minus 4, R minus 4, R minus 4. Now put the values one by one. First of all, put 4. So 4 minus 4. Then put minus 4, minus 4, minus 4. Recall integers. Minus minus plus, it means 8 but with negative sign, and here 0 minus 4, 0 has no value, so this is minus 4. So like this we will solve the sum. Fine, so note down, then we will start next question. Start beta. After writing, write them in the chat box. Yes. Now come to the next. Remaining parts of homework C, D, F. Okay. Now come to the fifth question. Come to the question number 5th. Fifth question. Fine. Solve the following riddles. You may yourself construct such riddles. No need to construct. Only we will solve these 4 riddles. Okay. Now, first is go around a square. Go around a square. Count every corner. Okay. Now, tell me number of corners in square. Very good, 4. Very good, Rishita, 4. According to question. Thrice. Thrice and no more. Thrice. Now, this is your first step. First step. Okay. Second step is thrice. Thrice means 3 multiplied by 4, that is 12. Okay. Add the count to me. Add the count to me. In the third step. Add. क्या add? हमें नहीं पता. We don't know. Okay. So write any variable. X plus 12. Count to me 34. This is the question. Right. Add the count to me to get exactly 34.
मेरे में कुछ प्लस करो जिससे मेरी वैल्यू क्या हो जाए 34. सो इन द फोर्थ स्टेप x is equal to 34 minus 12. So you will get 22. So in the result 22. Write down. Yes. Yes, very good, Suhana. Well done. मूव अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. आपके क्वेश्चन में क्या गिवन था? काउंट द कॉर्नर्स इन स्क्वायर. ओके, हमने काउंट किए. कितने होते हैं? 4. नेक्स्ट पार्ट इज थ्राइस. थ्राइस मीन्स 3 multiplied by 4. You will get 12. Okay. The next is add. Add the count to me. Add something in me. We don't know, so write any variable. X plus 12 to get 34. So what is the result? The result is 22. So write down, then we will start next question. After writing, tell me, then we will start next question. Now come to the B part. For each day of the week. Now the question is based on day of the week. So number of days in a week. 7. As we know. Okay. Make an up count for me. If you have no mistake, you will get 23. Make an up count for me. It means what you will add in 7. So x plus 7, you will get 23. This is the question. भी मेरे में आप क्या प्लस करोगे जिससे मेरा आंसर क्या आए? 23. Okay. So now x is equal to 23 minus 7. What is the result? Students, write down what is the result. Very good. 16. Yes. So like this you will solve. बेटा उसने लिखा हुआ है for each day of the week. Each day of the week. So number of days in a week is equal to 7. Make an up count for me. मेरे लिए काउंटिंग करो so that 7 किस में चेंज हो जाए? 23 में. तो 7 में क्या प्लस? अगर आपने x नहीं भी लिखना ना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. Make an up count to me means what you will add in 7 to get 23. This is the question. Okay. तो 7 में क्या डालने से ये 23 बनेगा? 16. So like this you will solve the sum. Okay. Now the next is Prerna, unmute yourself. Yes, ma'am. Read third question. I am a special number. Take away from me a 6, a whole cricket game. You will still be able to fix. Now tell me what is the result. Ma'am, 11 players हैं. हाँ ठीक X है. minus नहीं 11 plus प्लेयर्स है, 11. बिल्कुल सही है. क्वेश्चन क्या है? आई एम अ स्पेशल नंबर. मैं एक स्पेशल नंबर हूँ. ओके. टेक अवे फ्रॉम मी अ 6. मेरे में से 6 को टेक अवे. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टेक अवे? टेक अवे इज यूज फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन. Addition. टेक अवे बेटा, टेक अवे. Up count means add, take away. Away. Away का क्या मतलब होता है? छोड़ देना. छोड़. हाँ, away. उसको भेजो means minus, subtraction. Up count X नहीं. minus Up count X means is add,
टेक अवे मीन्स निकाल दो, माइनस, ओके। एंड मेरे में से 6 माइनस करो और आपको क्रिकेट टीम मिलेगी 11 प्लेयर्स की। नाउ टेल मी, कौन से नंबर में से 6 माइनस करोगे आपको 11 मिलेगा? टेल मी। वेरी गुड हर्षिया, 17. वेरी गुड सात्विक, वेल डन सुहाना, वेरी गुड। बोलो बेटा, यहाँ पे कौन सा 17. नंबर लिखने से जिसमें से 6 माइनस करोगे आपको यहाँ पे 11 मिलेगा? टेल मी। 17. वेरी गुड, 17. 17, yes, 17 minus 6 is 11, so in the result you will write 17, yes. Either write X here or question mark here or any other alphabet, your wish, no compulsion, okay? Good efforts. Now Chinmay, read fourth part. Chinmay, unmute yourself. Any other student who want to solve fourth part, raise your hand. No one? The question is, tell me who I am. I shall give a pretty clue. You will get me back if you Ma'am, take ma'am, me. ma'am. Yes, yes, Chinmay. Yes, ma'am. Chinmay, tell me fourth part. Listen the question. Tell me who I am. I shall give a pretty clue. भी मैं आपको clue दे रहा हूँ क्या? You will get me back if you take me out of 22. अगर आप मुझे 22 में से माइनस करते हो तो मैं दोबारा आपको मिलता हूँ। तो बताओ मुझे कौन सा नंबर है जो 22 में से माइनस करने से दोबारा मिलेगा? सोचो। मैम 44. बेटा 22 में से माइनस करोगे, 22 में से उसने क्या बोला है? इफ यू टेक मी आउट, टेक मी आउट मीन्स माइनस। 22 में से क्या माइनस करोगे? यहाँ पे ये दोनों सेम आएंगे। Yes. कनव, 0 नहीं आएगा बेटा। कनव, यू आर राइटिंग 0। अगर आप यहाँ पे 0 लिखते हो तो यहाँ पे आपको 22 मिलता है, तो ये दोनों सेम नहीं है। क्वेश्चन इज, इफ यू टेक मी फ्रॉम 22 यू विल गेट मी बैक। जब आप 22 में से मुझको मेरे को माइनस करोगे तो मैं ही इधर आ जाऊंगा। सोचो चिन्मय बेटा, कौन सा नंबर यहाँ पे लिखने से सेम आंसर आपको इधर मिलेगा, दिस साइड? मैम मैम ये कहीं नेगेटिव में ऐसे है क्या? नहीं नहीं बेटा, नेगेटिव में नहीं आएगा। आपका यहाँ पे सेम नंबर आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लिखा है ना, इफ यू गेट मी बैक। अगर आपको मैं दोबारा मिलूं, आप चाहते हो मुझे, इफ यू टेक मी आउट ऑफ 22, कि मैं आपको दोबारा मिलूंगा जब आप मुझे 22 में से माइनस करोगे। मैम फिर तो 0 आना चाहिए। अच्छा, देखो 0 आ गया, ठीक है। 0 लिखने से यहाँ पे क्या आएगा चिन्ह बताओ मुझे। मैम 22। तो फिर मैं दोबारा तो मिला ही नहीं। ये थोड़ी ना, ये नंबर कह रहा है, ये नंबर कह रहा है कि जब आप मुझे 22 में से टेक अवे करोगे तो मैं यहाँ पे दोबारा आऊंगा। ये वाला नंबर बोल रहा है। आपने बोला 0, 44। 0 तो आया ही नहीं। 44। 11 is the result. And students, very good response from all of you. Chinmay got. मैम मैं सोच रहा था कि यहाँ पे 22, मैम मेरे को लगा कि यहाँ पे 22 आना चाहिए। No. Chinmay, the question is, tell me who I am. I shall give a pretty clue.
you will get me back if you take me out of 22. भी मैं आपको दोबारा मिलूंगा जब आप मुझे 22 में से माइनस करोगे. ये नंबर बोल रहा है, 22 नहीं बोल रहा. ओके, ये नंबर बोल रहा है भी जब आप मुझे 22 में से माइनस करोगे तो मैं आपको दोबारा मिलूंगा. तो 11, 22 minus 11 will give you 11. So in the result you will write, number is equal to 11. Fine. I hope now clear to you. So come to the next. Come to the exercise 11.1. Students, come to the exercise 11.1. Question number 1. Find the rule. Find the rule which give the number of matchsticks required to make the following matchstick patterns. Use a variable to write the rule. Okay, now listen to me very very carefully. You will not write anything now. Put your whole concentration here. Okay, आपने पैटर्न बनाना है using algebra. First of all here you will write 1t. Okay, how many matchsticks used? 2 matchsticks. Okay, now come to the next. In 2 t's, how many matchsticks used? Look, 1, 2, 3, 4. Now come to the next. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Similarly, come to one more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Now make a rule. All are multiple of 2. So you will write this 2 multiplied by 1, 2 multiplied by 2, 2 multiplied by 3, so 2 multiplied by 4. Make a pattern like this. Okay. Now what is the rule? In general, rule is equal to, now look here. बेटा 2 देखो हर बार आ रहा है, हर बार 2 आ रहा है. 2, 2, 2, 2. So 2 multiplied by, चेंज क्या हो रहा है? सेकंड नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, नेक्स्ट में क्या आएगा 5. सो इन जनरल यहाँ पे आपको ये वेरिएबल लिख दो x. So this is the rule 2x. Like this you will solve the sum. First of all t, 2, then 2t means 4, then 3t means 6, 4t means 8. Now make a rule. 2 is 2 multiplied by 1, 4 is 2 multiplied by 2, 6 is 2 multiplied by 3. बेटा सिमिलर पैटर्न रखना, इसको 3 multiplied by 2 नहीं लिखना, सेम पैटर्न चलेगा. अगर 2 फर्स्ट है तो 2 ही आएगा. 2, 2, 2, 2. चेंज क्या हो रहा है? सेकंड वाला नंबर. तो सेकंड नंबर जो चेंज हो रहा है उसके प्लेस पे कोई वेरिएबल लिख दो. So 2x. This is the result in general rule. Now come to the next. Yes, Bhavya. Bhavya, unmute yourself. Yes, ma'am. Bhavya, tell me how can we solve B part? A pattern of letters Z as this. Now tell me. Okay, ma'am.
in Ma'am, one Z. फर्स्ट मैम पहले Z में मैम 3 मैस्टिक्स यूज हुई है. Yes. So here Second, देखो 6. 1 2 3. So write 3 here. And then 2Z में कितनी हुई? 6 मैम. देन थर्ड में 9. थर्ड में 9 और 4 में 12. 12. नाउ टेल मी कोई पैटर्न बन रहा 3 है into इससे? 1. कोई Yes, पैटर्न ma'am. फॉर्म हो रहा है? बन रहा है. Yes कौन मैम. सा? मल्टीपल्स ऑफ 3. 3 Yes. into 1. All the multiples of 3. 3 multiplied by 1. 3 multiplied by 2. 3 multiplied by 3. 3 multiplied by 4. Now tell me in general how will you write the rule? मैम 3x. 3x. जरूरी नहीं है x लिखना है, जो मर्जी लिखो. 3x लिखो, 3y भी हो सकता है. 3y लिखो, 3z लिखो, कुछ भी लिखो, your wish. So this is general rule. Okay, very good. Now the next is Nitya. Nitya, Yes, ma'am. come to the next part. A pattern of letter U as U. Now tell me. Tell me. So first में 3 U. फर्स्ट में 3 है, ठीक है. सेकंड इसमें 6 6. वेरी गुड. नेक्स्ट में 9 यस. नेक्स्ट में 12. यस. नाउ कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है? Ma'am, yes, multiples of 3. ओके, वेरी गुड. यस भव्या, टेल मी. मैम मैंने पूछना था, ये जो आपने 2 यूज बनाया है, 3 बनाया है, इन्हें इकट्ठे नहीं कर सकते? इकट्ठे कैसे? मींस कंबाइन करके इनको बना दे. मुझे आपकी बात नहीं समझ आई भव्या. मैम जैसे मैम ऐसे ये ऐसे कंबाइन करके. यू वांट के कॉलम ना? हाँ हाँ हाँ, दिखाओ मुझे, दिखाओ, शो मी. ऐसे मैम कंबाइन करके. नहीं 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 भव्या, कंबाइन नहीं करना. कंबाइन Okay. नहीं करना, वो तो आपने ज्वाइन कर दिया उसको. ज्वाइन करने से तो आपकी 1 स्टिक कम हो जाएगी. ज्वाइन नहीं करना. ओके. ज्वाइन नहीं करोगे आप, उसने ज्वाइन करने को नहीं बोला. नाउ दिस इज 3 multiplied by 1, 3 multiplied by 2, 3 multiplied by 3, 3 multiplied by 4. So in general, rule is equal to 3u. चाहे u ही लिख लो. As the question is based on u ना, so your wish, write any variable. Write any variable. Okay. So next part, your homework part. Okay beta, only 1 minute left. So make a pattern for S. Students, make a pattern for S and write down your result in the chat box. Make a pattern for S, F part. And tell me the result in the chat box. I am waiting. Very good. 5. Yes. 5 matchsticks used. So in general, the rule is 5u. This is the general rule. 5u. Yes. Prerna, not 5 beta, 5u. 5u is the rule. Okay.